कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद लगातार सियासत जारी है और इसी सिलसिले में राहुल गांधी की क़यादत में गुज़िश्ता दिनों कश्मीर दौरे पर जा रहे थे, जिनको श्रीनगर एयरपोर्ट से सिक्योरिटी इंतजामिया ने बेरंग वापस दिल्ली भेज दिया। कश्मीर दौरे से लौटाए जाने के बाद राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत पर हमला बोला था। ऐसे में अब बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। मायावती ने इशारों में राहुल गांधी के कश्मीर जाने के फैसले को गलत बताया है। मायावती ने कहा है कि कांग्रेस का दीगर पार्टी के लीडरान के कश्मीर जाने से मरकज और वहां के जो गवर्नर हैं उनको सियासत करने का मौका उन्होंने दे दिया है। वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर पर बयान को पाकिस्तान में हाथों हाथ लिया जा रहा है। राहुल लगातार पाकिस्तान में सुर्खियां बटोर रहे हैं। राहुल गांधी को श्रीनगर एयरपोर्ट पर रोकने के वाक़े को पाकिस्तान ने फौरन लपका और वहां के हुक्मरान इस पर एक के बाद एक लगातार ट्वीट करने लगे। अब राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर को लेकर ट्वीट किया और एक वीडियो शेयर किया तो पाकिस्तान ने उसको भी हाथों हाथ ले लिया है, जिसके बाद कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने राहुल गांधी के कश्मीर दौरे पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी यहां उनकी कोई जरूरत नहीं है। उनकी जरूरत जब उनके हामी कश्मीर मसले को लेकर पार्लियामेंट में बोल रहे थे तब थी। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी कश्मीर में हालात को खराब करने के लिए यहां आना चाहते हैं तो दिल्ली में राहुल गांधी ने जो झूठ बोला था उसी को दोहराना चाहते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। वहीं 370 हटने के बाद घबराए पाकिस्तान ने पीओके में अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। तस्वीरों में आप देख सकते हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी को और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो रही है। जम्मू कश्मीर से दफा 370 और 35 से हटाए जाने के बाद ये पहली ट्रंप की और मोदी की मुलाकात है। किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं हमारे कॉमन वैल्यूज, मानव जात के लिए, दुनिया के लिए, प्रगति के लिए किस प्रकार से काम आ सकते हैं, ऐसे अनेक विषयों पर बहुत गहराई से बात होती रहती है। भारत का और अमेरिका का आर्थिक क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में लगातार बातचीत हो रही है और कई विषयों में हम अमेरिका के सुझावों का स्वागत करते हैं और मिलजुल करके ट्रेड के क्षेत्र में आगे बढ़ने की दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। भारतीय समुदाय अमेरिका में भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। भारतीय समुदाय अमेरिका में जिस प्रकार से विकास यात्रा में भागीदार बना है, अमेरिका ने जिस प्रकार से भारतीय समुदाय को आदर, सत्कार और सम्मान दिया है, इसके लिए मैं राष्ट्रपति ट्रंप का, उनके शासन का, प्रशासन का, वहाँ की जनता का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। Mr. President, can you clarify your position? Today, I'm meeting my friend and the representative of the oldest democracy in the world, President Trump. It's a very important meeting for me, and whenever we've had the opportunity, we've always met. As you know, India is the largest democracy, and we have our elections recently where 700 million Indian voters chose their government, and President Trump have telephoned me to congratulate me, and again today he has conveyed his congratulations. I'd like to thank him for that. India and the United States are countries which have shared democratic values, and we work for the welfare of the world, and whatever contribution we can make in whichever way, we have these common values, and we work for the progress of humanity, for the world, for continuous progress. We have continuous discussions on these issues. India and the United States, we have been discussing on a continuous basis various economic, trade and commercial relation issues, and on many of these issues we have welcomed US suggestions. Together we are working in the area of trade. We are making efforts to take this forward. The Indian community in the United States has made substantial investments over the years. They have taken part very actively in the development part of the United States, and the way the United States has showered love
and has embraced them as their own. For that, I would like to thank President Trump, his administration, and the people of the United States. Mr. President, can you clarify your position on whether you will mediate on Kashmir, please? Well, we spoke last night about Kashmir, and the Prime Minister really feels he has it under control. I know they speak with Pakistan, and I'm sure that they will be able to do something that will be very good. You want to We add spoke something? about it last night at Korea. Mr. Modi, do you want to add? भारत और पाकिस्तान के बीच कई बायलैटरल इश्यूज हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के चुनाव के बाद जब मैंने उनको टेलीफोन किया था तब मैंने उनसे कहा है कि पाकिस्तान को भी गरीबी के खिलाफ लड़ना है, भारत को भी गरीबी के खिलाफ लड़ना है, पाकिस्तान को भी अशिक्षा के खिलाफ लड़ना है, भारत को भी अशिक्षा के खिलाफ लड़ना है, पाकिस्तान को भी बीमारी के खिलाफ लड़ना है, भारत को भी बीमारी के खिलाफ लड़ना है। हम दोनों देश मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़ें, हमारी असुविधाओं के खिलाफ लड़ें और हम मिलकर के दोनों देश की आवाम की भलाई के लिए काम करें। ये संदेश मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी को भी दिया है और राष्ट्रपति ट्रंप से भी हमेशा हमारे इस बायलैटरल संबंधों के संबंध में बात होती रहती है। Between India and Pakistan, there are many bilateral issues, and after Mr. Imran Khan became the Prime Minister of Pakistan, I called him up to congratulate him, and I told him that Pakistan needs to fight poverty, India too. Pakistan needs to fight illiteracy, India too. Pakistan needs to fight disease, India too. And so together, let us join our forces to fight poverty and all the ills that are facing our two countries. Let us work together for the welfare of the people of our two countries. And this is the message that I keep giving my counterpart in Pakistan. Along with President Trump, we also keep talking about the different bilateral issues between us. Mr. Modi, would you like to have President Trump be involved in negotiating between Pakistan and India? भारत और पाकिस्तान के सारे इश्यूज बायलैटरल हैं और इसलिए हम दुनिया के किसी भी देश को इनके लिए कष्ट नहीं देते हैं और मुझे विश्वास है कि भारत और पाकिस्तान जो 1947 के पहले एक ही थे, हम मिलजुल करके हमारी समस्याओं पर चर्चा भी कर सकते हैं और समाधान भी कर सकते हैं। India and Pakistan have all the issues are of bilateral nature, and we do not want to give pains to any country in the world to in fact try to do anything in this, because these issues are bilateral. And I trust that before 1947, when we were one country, that even afterwards we can find solutions through discussions. Mr. President, is that offer still on the table? I'm here. I have a very good relationship with both gentlemen, and I'm here if for any reason, but I think they can do it themselves very well. They've been doing it for a long time. President, the Chinese have said today publicly that it's more low-level calls that have happened, and they're downplaying the significance of the calls the U.S. administration. I don't know what you mean by that. Low level? The vice premier is low level? I don't think so. I mean, it's in your mind they're low level. And what is the position of the gentleman that was quoted in the newspaper today? Right. So the Vice Premier, Leo Ho, came out with a very significant statement, and we've been communicating through intermediaries back and forth with him. What's the Vice Premier of China? Yes, sir, I understand. That's not low level. I understand, I agree. I was just, there was a statement that the spokesman for the Foreign Ministry, for instance, said they weren't aware of the calls happening. I don't know about as far as There's been communication at the highest level. Thank you, Mr. At President. the highest level. Can you clarify the calls, Mr. Minister? No, I don't want to. We don't want to go into. We don't want to go into. Hey, look, in the meantime, our country is doing great. We're doing great. And the Prime Minister just congratulated me. Everybody that's met has congratulated us on the job we're doing in the United States with our economy. Our economy is phenomenal, best it's ever been. And that's despite the trade deals. And when the trade deals get done, like we did with Japan yesterday, we did a really big, tremendous trade deal with Japan. And we have others coming. We're negotiating now in earnest with the European Union.
because they want to do that. They want to do that, and I do too. So when we get these deals done, our country will be transformed. I mean, it'll be monetarily transformed. It's such a difference between the horrible, horrible one-sided deals that we had in the past. And frankly, past administrations should be ashamed of themselves for allowing that. But we have many of them. One of them is the USMCA, Mexico-Canada. And hopefully that'll get voted on very quickly. Everybody wants it to happen, so hopefully we can make that a bipartisan bill. But we have many trade deals that are doing very well, and including China. And I think it was necessary to go through this, you would say a rough patch, but I'd say it may be much more than a rough patch. But that's okay, because we've been paid billions and billions of dollars. And you know that prices haven't gone up, and there's been no inflation. And we've put a lot of money in the Treasury, and tens of billions of dollars. And I've given a lot of it to the farmers that were hurt. I've been able to give a lot of money, compliments of China, to the farmers that were hurt, because we gave them $16 billion and we gave them $12 billion the year before. That made them whole. That was the amount of money that China didn't invest in to our farmers, give to our farmers. So the farmers have been amazing, but they're very happy with the job we're doing. But eventually they're going to be the biggest, or one of the biggest beneficiaries. Okay? Mr. President, did you attend the climate session? Say it? Did you make it to the climate session? Were there any conclusions that you took? I'm going to. In fact, it's going to be our next session. So we haven't had it. Do you have a message that you'd like to deliver to? No, I want clean air and clean water. And we're right now having the cleanest air and cleanest water on the planet. But that's what I want. I want absolutely clean air and clean water. Mr. President, just briefly back on China, we saw the comments from you about wanting calm. Calm, exactly. Just wondering if you could clarify what you meant about the call. Was that with light hydrogen? I don't want to talk about calls. We've had calls. We've had calls at the highest levels. But I don't want to talk about that. But the vice chairman put out a statement last night that was a statement and saying that he wants to make a deal and he wants calm. And I think it's a very good word to use. It's not a word that I use that often, but it's a good word to use. And I think it's one of the reasons it's a great country. I mean, they understand. I think that message also helps with respect to Hong Kong. I really do. I think it makes it easier for Hong Kong to do something. And I think that President Xi will do something with Hong Kong. I really think that message is a good message with respect to what the ultimate outcome is in Hong Kong. Very, very positive message. And we appreciated it. We appreciated it. What else? Anything else? Mr. President, what are your latest thoughts on your threat on pulling out of the WTO? And if you do, can I also ask Mr. President Modi what your response to that in terms of how it affects India's trade strategy? Well, we haven't been happy with the WTO, but now we're winning cases. We won the big Airbus cases, you know. And it's a tremendous case. I mean, it's billions of dollars. That was a very recent victory, and we're winning cases now. And we're being treated more fairly now in the WTO, which we appreciate. मुझे लगता है कि हम दोनों को बात करने दीजिए, हम दोनों बात करते रहेंगे. जब जरूरत पड़ेगी आप लोगों को जरूर जानकारी पहुंचाएंगे. He actually speaks very good English. We just don't want to talk about it. I think that you should let us discuss these things, and when we feel need, we will communicate to you. Mr. President, Russia has just recently said they have no intention of asking to be readmitted to the G7. However, No, I wouldn't expect they'd ask, because why would he's a proud man. He's done a real job, and why would he ask? No, it's something we discussed, and it's under discussion now. No votes or anything, but I would be inclined to say yes, and so would others, and some probably wouldn't be, but it's just a discussion. No, I would think that he wouldn't do that because he's a proud man. He wouldn't ask, but if something would happen, he would be asked, and I'm sure he would say yes to that. do you have any indication from them that they would accept? No, I think it was a very good discussion. It was the initial discussion, but it was a very good discussion. But I think it would be appropriate. I think it would be good for Russia.
I think it would be good for everybody. I think it would be a positive, but it's just a discussion that we had. It was a very interesting discussion and very, I think, pretty even. I think ultimately people like the idea. Mr. President, what would be your message to the American people in terms of what is your biggest achievement at this G7? Well, we've had a lot of achievements. We have an achievement with Prime Minister Modi because we're doing great trade. We're doing a lot of trade with India. That's an achievement. I think, obviously, the Japan deal is a tremendous achievement because it's one of the biggest trade deals, and it affects directly our farmers. Even the fact that he's taking all of the excess corn that China didn't take, hundreds of millions of dollars worth of corn, and he's buying that. Japan is buying all of that corn at a fair price, and that was great. So that was very important. I also think that unity is very important. We had a very good, despite you read the newspaper stories, the stories bear no resemblance to what's taking place. You saw me with Chancellor Merkel. You saw me with all of them. The relationship is great. We have 7 nations. In addition to that, we have other nations like India and others that came in. Australia came in, Scott. We have a lot of people came in. And I'll tell you, it's been total unity. What would be the area of most unity, There's been no dissension. There's been no fights or arguments. There's been no anything. I mean, there's been great unity here. And honestly, the papers haven't reported how good it's been. So what would be your most common ground? Is it climate change? Is it gender equality? I think we have a lot of things. But I think really the unity, the fact that we're all getting along so well, I think is one of the big takes from this. We really have good relationships, and we're doing a lot about a lot. Okay? Just so we get our reporting right, I'm going to give it one more crack on China. When you were referring earlier to the Buddha statement, which we all saw, did you mean to say that there was also a call last night, or was there not actually a call last night? There were discussions that went back and forth. Let's just leave it at that. Last night and before last night. Yes. With China. With China and before last night. Numerous. Look, they want to get something done. I've been saying that for a long reason. And why wouldn't they? They want to get something done. They've lost millions of jobs. Their supply chains are being hurt. And once those supply chains go, you can develop new supply chains. You can't get them back into China. So China is run by really a great leader. I think he's a great leader. He wants to do something. They lost over 3 million jobs in a very short period of time. A lot of companies have left China and they're leaving China. They want to get it done. I knew that. I could have told you that without talking, but we are talking. And would you still like to see U.S. companies leave China? Depends on whether or not we make a deal. If we don't make a deal, I'd like to see them leave China. Absolutely. If we make a deal, I'd like to see them stay there and do a great job. Mr. President, on the Afghanistan peace talks, do you have an updated timeline, or are there any snags? No timeline, whatever it is. We're no rush. I mean, we're there. We're really a peacekeeping force more than anything else, frankly. And said we could win that war in a very short period of time, but I'm not looking to kill 10 million people. Okay? And we are working along with the Taliban, with the government, and other people too. And we'll see what happens. No timeline. Thank you very much. We're going to be doing a news conference in a little while. Just one more thing. If you need one, you need one? I don't think you need one. Always think it's I can't imagine any other question. I just want to thank the Prime Minister. He's a great leader right here. Would you allow them to have nuclear weapons? Great election result. Would you allow them to have nuclear weapons, sir? Thank you, Press. Thank you, Press. Would you allow India to have Thank you, nuclear Press. weapons? Thank you. Thank you, Press. Thank you, Press. Thank you. तो जिस मुलाकात का इंतजार था वो मुलाकात हो गई है। G7 समिट में नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई है और उम्मीद जैसी थी कि कश्मीर मुद्दे को लेकर बातचीत होगी, वो बातचीत भी हुई है। लेकिन साफ तौर पर हम आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये मुद्दा जो है वो इन दोनों मुल्कों का आपसी मुद्दा है और ये दोनों मुल्क आपस में इसको सुलझा लेंगे। जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी से इसको लेकर बातचीत की गई तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि भारत और पाकिस्तान को भी गरीबी से लड़ना है,
शिक्षा से लड़ना है और हेल्थ की जो परेशानियां हैं उससे लड़ना है दोनों ही मुल्कों को, तो हम साथ मिलकर इन चीज़ों से साथ में लड़ेंगे और कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है हम दोनों मुल्कों के बीच जिसमें किसी तीसरे की दखल हो और हम किसी तीसरे को कष्ट नहीं देना चाहते हैं। ये कहा था वजीर आजम ने। उन्होंने कहा कि हमारे जो मसले हैं वो बायलैटरल ही हैं, यानी दोनों मुल्कों के बीच ही हैं और हम ये तमाम मुद्दे दोनों मुल्कों के बीच में ही सुलझा लेंगे। और हम आपको बता दें कि काफी देर तक बातचीत हुई है दोनों मुल्कों के बीच में, मोदी और ट्रंप के बीच में मुलाकात हुई है। कश्मीर का मुद्दा जिस तरह से उम्मीद थी वो उठा है, लेकिन जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान एक उम्मीद से जरूर देख रहा होगा कि शायद ट्रंप कश्मीर मुद्दे को लेकर कोई बात कहेंगे, लेकिन बहुत सरसरी तौर पर ट्रंप ने कश्मीर की बात कही और ये कहकर वो आगे बढ़ गए कि ये मसला जो है वो दोनों मुल्कों के बीच का है, मेरी बात दोनों मुल्कों से हो चुकी है, फोन पर भी हुई है, इमरान खान से हुई है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भी हुई है और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको ये आपसी तालमेल से ये मुल्क आपस में सुलझा लेंगे। और अपनी डिबेट पर लौटते हैं और हम बात कर रहे थे कि किस तरह से लगातार कश्मीर को लेकर सियासत हो रही है। पहले अपोजिशन वहां पर जाता है और वहां से उसे बैरंग वापस लौटा दिया जाता है और आज मायावती ने एक तरह से साथ दिया है इस पूरे मसले पर। जब ये इसको हटाया गया था तब भी उन्होंने वोटिंग में भी साथ दिया था और अब खुलकर वो साथ आ गई हैं और एक तरह से अपोजिशन पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। इस पर बात करने के लिए फिलहाल दो खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं, जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ डॉक्टर संदीप कुमार श्रीवास्तव साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर एस.के. दत्ता साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। गुलरेज शेख साहब हैं, बीजेपी के लीडर हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। गुलरेज साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, मायावती आज बहुत पसंद आ रही हैं आपको? पहले तो मैं समूचे भारत को बधाई दूंगा कि आज एक और हमने जो डिप्लोमेसी का आयाम है वो तय किया और आपने देखा किस प्रकार से मोदी जी ने साफ साफ यूनाइटेड स्टेट्स को, ट्रंप साहब को भी कह दिया कि आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, हम अपने मसले खुद सॉल्व कर लेंगे और ट्रंप जी ने भी वही की वही भाषा बोली। तो ये जब होता है, जब नेतृत्व जो है ईमानदार होता है, सक्षम होता है और देश उसके पीछे खड़ा होता है। नाउ कमिंग टू कश्मीर, देखिए कश्मीर का विषय भी एक 70 साल से, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं द पॉट इज बॉइलिंग, तो ये जितने भी राजनीतिक जो परिवार थे और राजनीतिक दल थे, और मैं कहता हूं कि राजनीतिक दल सीमा के इस पार भी और उस पार भी, और बहुत सारे, चाहे वो सेपरेटिस्ट हो या उस तरफ के जो आतंकवादी हो, वे सब फल फूल रहे थे और अपनी दुकानें चला रहे थे कश्मीर को एक विषय बनाकर। इस सरकार ने क्या किया, उस विषय को समाप्त कर दिया। हम नहीं चाहते कि जो ये पॉट है वो बॉईल होता रहे, तो उसके लिए एक कड़ा कदम उठाया है, एक सख्त कदम उठाया है, लेकिन वो सख्त कदम जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का है, वह जो है दहशतगर्दों के है पर है, जो सियासी रोटियां सेकते हैं उन पर है। कश्मीर की जो आवाम है वो तो हमारे भाई बहनों, हमारे बच्चे हैं। लेकिन गुलरेज साहब, अपोजिशन ये इल्जाम लगा रहा है, खासतौर पर कांग्रेस का ये इल्जाम है कि ईडी और सीबीआई से डराया जा रहा है, इसलिए मायावती इस तरह की बातें कर रही हैं। देखिए मायावती जी जो है, मैं उनकी बहुत सारी बातों से सहमत नहीं होता हूं और आप बोल रहे थे बड़ी अच्छी लग रही है आज, बात अच्छा और बुरा लगने की नहीं है। मायावती जी एक अच्छी पॉलिटिशियन है और वे समझती हैं कि देश का मिजाज किस तरफ है, और जो व्यक्ति भी देश का मिजाज के विपरीत जाएगा, देश की भावनाओं के विपरीत जाएगा, वो राहुल गांधी जैसा रणछोड़ बन जाएगा। और मायावती जी जो भी है, कम से कम रणछोड़ तो नहीं है। ये जो रणछोड़ वहां पे कश्मीर पहुंचा था, वह रणछोड़ इसलिए पहुंचा था कि वहां पर जाकर सिचुएशन को खराब कर सके और पॉलिटिकल गेन ले सके। और ये लोग कोई, ये क्या है, जो एक आग लग रही थी ना मैडम 7 दशकों से, उस पर आज पानी डाला गया है।